Hello students, how are you? Today my video is for class 9th, 10th and 12th. In this video, I am going to teach you prepositions. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show some relation between the noun or pronoun to some other words in the sentence. preposition वो शब्द होते हैं जो नाउन और pronoun से पहले आते हैं और ये नाउन और pronoun का कनेक्शन शो करते हैं सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ. For example, the bird is sitting on the ground. This is a work of mine. The mayor is in the stable. He is going with us to Mumbai. The noun or pronoun that is used with the preposition is called the object and is said to be governed by the preposition. तो जो noun या pronoun आपके preposition के बाद में आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं object. जैसे पहले सेंटेंस में ग्राउंड इज़ गवर्न बाय द preposition ऑन, यानी कि ग्राउंड जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन preposition हो गया. सेकेंड सेंटेंस में माइन जो प्रनाउन है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ऑफ जो है आपका preposition हो गया. पोजीशन ऑफ preposition, द वर्ड प्री preposition इज मेड बाय टू वर्ड्स प्री प्लस पोजीशन विच मीन्स प्लेस्ड बिफोर, यानी कि पहले आने वाले. When a preposition is used with an infinitive, the preposition is placed at the end. जब infinitive के साथ आते हैं, जैसे किसी भी verb से पहले अगर हम to यूज़ कर देते हैं, यानी कि to प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो वो infinitive बन जाते हैं. तो इसमें जो है preposition लास्ट में आ जाती है. जैसे they need a house to live in, यहाँ पे to live यह आपका infinitive है और in जो है आपका preposition है. When the object of the preposition is a relative pronoun which is understood, the preposition is placed at the end. This is the boy whom she was speaking of. यानी कि जब हमारा जो अगर कोई pronoun बीच में यूज़ हुआ है, relative pronoun यूज़ हुआ है, तब भी preposition जो है end में आता है. When the object of a preposition is an interrogative pronoun, the preposition is placed at the end. जब preposition का object जो होता है एक interrogative pronoun होता है तब preposition end में आता है. Whom are you hinting at? What are you sitting on? तो यहाँ पे जो sitting आपके जो preposition का जो interrogative pronoun है वो whom आ गया, what आ गया, इसलिए preposition end में आई हैं. When the object of the preposition is a relative pronoun, that the preposition is placed at the end and not before the object. जब हमारा object of preposition जो हमारे preposition का object है एक relative pronoun है, that है, relative pronoun में that भी आता है, तो preposition जो है object से पहले ना आके last में आता है. Show me the pencil that you were writing with. This is the boy that your uncle shouted. तो दोनों जगह that है, ये एक relative pronoun है, इसलिए preposition जो है आपकी end में आई हैं. As a rule, preposition is placed before its object. रूल यही कहता है कि object से पहले preposition आना चाहिए. The child fell from the tree. तो the tree यहाँ पे tree जो है आपका object है और from जो आ गया आपका preposition आ गया. Now we will see the kinds of preposition. Simple preposition: on, in, at, by, of, for, to, up, from, through, till, after, under, over, of, out. ये सारे आपके simple preposition हैं. Compound preposition: they are formed by prefixing preposition a on or b by to a noun, an adjective or an adverb. तो जैसे कि preposition usually a, on, b, by ये जो है अगर इनसे पहले हम कोई noun या adjective या adverb डाल देते हैं तो वो एक compound preposition बन जाते हैं. जैसे on and middle, by behind यानी b plus hind, before b plus for, across, along, about, around, beyond, beneath, below, beside, between, within, without, inside, outside. ये सारे आपके हैं compound preposition. Phrase preposition: these consist of group of words which
with the force of a single preposition. They are usually end with a simple preposition as by way of, for the sake of, with a view to, instead of, in the case of, by means of, away from, because of, in spite of, in favor of, according to. ये सारे आपके phrase prepositions हैं. Participle preposition. There are few words which are present participles of the verb but are used without any noun or pronoun attached to them. They are used as prepositions. तो जब कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ing फॉर्म जो होता है वर्ब का, अगर वो यूज़ हो रहा है बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के, तो वो जो है आपके पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो जाते हैं. जैसे टेकिंग इनटू अकाउंट, with regards to, about, touching, concerning. About his murder there is much talk in the town. While waiting for the decision of the court, he will act as the head clerk in the office. So while waiting for. Double preposition. These are used whenever a simple preposition fail to express the correct sense, as into, onto, from, above, from, within, from, among. ये आपके कुछ डबल preposition हैं. Correct use of some preposition. At school, at peace, at sea, at home. At का यूज़ बता रही हूँ मैं आपको. At distance, at noon, at war, at hand, at the door, at present, at dawn, at night. Sometimes at forms a phrase with the help of an article. Preposition है at, article है the, और picture, noun आ गया आपका picture, beginning, moment. At the picture, at the beginning, at the moment, at the bottom. Now we will see some use of on. On the table, on the trail, on the road, on duty, on the way, on time, on foot, on land, on 28th June, on the way, on a subject, on the north. In pain, in advance, in ink, in ruins, in joy, in the evening, in the day, in the army, in sorrows, in arms, in office, in the sun. By post, by boat, to learn by example, done by hand, by check, die by poison, by chance, die by thousand, by luck. For fear, to flee for life, for sale, for shame, for all his properties, for a rupee, for the sake of, left for home, speak for. 2. Go to Delhi, to high rank, add 2 to 4, sweet to taste, to the half, to the death, to the last moment, what is she to you? 4 to 5. With. He is ill with fever. Are you angry with him? The teacher beat him with the stick. He went to the market. तो ये सारे कुछ uses थे आपके with के. Upon. Success upon your hard work. He is bent upon making mischief. The dog sprang upon the table. The umbrella was now over. The umbrella was over his head. He has lost control over his horse. From. He is suffering from fever. The thief escaped from the prison. These were the some uses of from. Underline the preposition in each of the following sentences. जैसे फर्स्ट वाला आपके लिए करके दे रखा है. द आर्टिकल अबाउट ओशियंस इज सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग. अबाउट इसमें प्रपोजिशन है, तो सेकंड वाले में ऑफ प्रपोजिशन आ गया. इन सेकंड वन, इन मोस्ट प्लेसेस इट इज़ ऑल्सो कोल्ड. इन, तो मैंने ये 2 कर दिए हैं, बाकी के आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं. इन नोटबुक्स आपने ये 1 से लेके 10 तक आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं. देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स.
My pet lizard ran into the door. Should the dog be allowed on the sofa, you will find a patch of flowers under the bridge. बाकी के ज़रूरी नहीं है यही आए, आप इसके अलावा कुछ और जो अप्रोप्रिएट आपको लग रहा हो वो भी आप लोग डाल सकते हो. ये भी एक्सरसाइज आप लोगों ने कॉपी में करनी है. There are some more sentences in which you have to do the fill in the blanks. ये थर्ड एक्सरसाइज भी सेम है. आपने इसमें सिर्फ इन, ऑन, एट फिल करना है. इस वाली एक्सरसाइज, थर्ड वाली एक्सरसाइज में 3 वर्ड्स आने हैं. या तो इन आएगा, या ऑन आएगा, या एट आएगा. आई लाइक सॉल्ट इन सूप बट नॉट टू मच. जॉन इज़ इन द हॉस्पिटल. 2 मैंने कर दिए हैं, दोनों में इन आया है, बाकी के 15 आपने खुद करने हैं. So students, I hope you have all got the video regarding to the preposition. If there is any query regarding to this chapter or you are not getting the exercise correctly, you can call me on 7827 113064. This is my personal number. You can message me on WhatsApp. You can call me or ask anything about related to the studies and I will surely help you. Till then students, stay safe, stay home and revise well. Bye for now.